Please note this. We have not sent it. India did not send it. Not able to send. But in spite of that, Prime Minister wrote letter to all the chief ministers. I quote, intrusion of the man into outer space. And unquote. Letter further says, it is very important. Our narrow world, we are entangled with all kinds of rivalries in the name of caste, greed and religion and national conflicts which have no meaning in this new age of science and space. Unquote. Sir, when the Chandrayaan sent to the moon, naturally your mind and heart must enlarge. Whereas I feel with all my sincerity that one side you are sending the Chandrayaan to the space and your heart and brain going down somewhere else, which contradicts. What happened to my elder leader, T.R. Balu is here. Sethu Samudram project, which was a dream for ours. It was completely stopped because of mythology, not by science. Sir, among the Chandrayaan celebration, sir, it is very painful. No, you, sir, nothing. क्या point of order है? Indian Constitution. Sir, I will finish 1 minute. No. Some point of order is there. Mr. Raja, some point of order is there. It should be listened. आप बैठ जाइए मैम. आप बैठिए. आर्टिकल 25. जी जी. भारत का संविधान 25 सर, वो कहता है कि कोई भी आदमी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है और किसी आदमी को यह आजादी नहीं है कि वो उसके धर्म के आस्था के ऊपर जो अटैक करे. ये भारत का संविधान कहता है. ये बार बार जो है हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं. हम सनातन को मानते हैं, हम हिंदू हैं और आपको कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए. बैठिए. ओके. देख लेंगे इसको, देख लेंगे. बैठ जाइए. जी. बैठिए. Mr. Raja, please. Mr. Raja, now please continue. Continue. And be careful. Sometimes mythology and history, they are mixed. They can't be separated altogether. You please take care of those things. Please. Okay. No. Please, बैठ जाइए. आप Mr. Raja, only Mr. Raja. Yes, please. Okay, his point is taken here. आप चलिए बोलिए. Please, you continue, please. Sir. Okay. ठीक है बैठिए. बोलिए. Sir. जी. बोलिए. Sir. We should be careful. Sir. I am repeating the words. Sometimes mythology Sir, and amongst history the, they are mixed. Yes, sir. I am not doing anything. Sir, I am not. In our nation, in our country, no. Sir. It is a tradition Sir. to tell the history through mythology. It is also a tradition Sir. there. Please now. Sir, without any Balu sir, reservation. you are very senior, sir. Sir, Please. without any reservation, cutting across the political parties, we are ready to shower encomium upon this government, the Prime Minister, no doubt. But am I not entitled to say the other side also? Sir, Chandrayaan went successfully to the moon. We are celebrating, no doubt. We are entitled. The world should know that where India is going. As a superpower of 4th place. After USA, after Russia, after China, no doubt. I am also Indian. I am having my own pride towards the country, towards the Prime Minister, towards the ministers. But, sir, my heart is, my heart is bleeding. Sir, my heart is bleeding. One side, Prime Minister was jubilant for Chandrayaan 3. Other side, Prime Minister was very proud to launch Vishwakarma scheme. For what purpose? At the age of 18, boys, you want to launch a scheme to enslave a barber as barber ever. To enslave a shoemaker as a shoemaker ever. To enslave a goldsmith as a goldsmith ever. No. To enslave a carpenter as a carpenter No. ever. Please. आप बैठिए ना. आप बैठिए. बालू साहब, please come to the Chandrayaan only. Vishwakarma Yojana here is not to be discussed now. Please. You repel it. No. You repel it. There could be different interpretation also. Mr. Raja, there could be different Sir. interpretation also. Please Sir. don't go into those
minute problem for our... Sir, No. sir, when I am seeing... Sir, the advertisement came. The advertisement came in the newspaper. You see the photograph. The man is chewing the shoe. And another man is moving the gold. Is there scientific... No, Mr. Raja, please. Sir. No. Sir. It doesn't mean like that. No, Sir. please. Sir. It doesn't mean like that. To help Sir, some sir, barber. sir. To help some... No. Austin will... Okay. Sir. Ji. Sir. नहीं अब बैठिए देखिए ये एक सेकंड Austin, ये no मैं मेरा एक आपसे Sir, निवेदन I है will complete after that. You can... जी चलिए Sir, the Nehru's political and scientific temper was assessed by one David Michael. He said, I quote, "The arrival of humanity on the moon was interpreted by Nehru as an opportunity to emancipate humanity in India from all cycles." Unquote. So, how we are viewing this Chandrayaan? It is not a mere scientific glory. Other side, it should give equal sociological effect to the common people to maintain equality and give all accessible science to everybody. Sir, I am finally, sir, I plead government, don't give any unscientific color to Chandrayaan. Yes. America did not do that. USSR did not do that. China did not do that. Please put the name of... Please. No, I'm finishing. Sir, please put the name of Vikram Sarabhai name for Chandrayaan 3. Thank you. Yes. Very good. श्री स्वागत राय जी. Sir, I rise to speak on the... पिछले बार क्या बोले थे याद है फिर बोले क्या Sir, I rise to speak on the success of the Chandrayaan. I congratulate S. Somnath and all the scientists of ISRO. देखिए एक सेकंड जब आपका बोलने का सुनिए आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. प्लीज लिसन. आपकी कोई चीज रिकॉर्ड में नहीं जा रही है. आपको अवसर मिलेगा बोलने का. माननीय शांत बैठिए बिजोड़ी जी. नो बैठ जाइए आप. आपको जब अवसर मिलेगा अपनी बात कहिएगा, अपना तर्क रखिएगा. अभी जो बात कही जा रही है उसको सुनिए आप प्लीज. Sir, प्लीज. I congratulate Somnath and all the scientists of ISRO. I may mention... अब बोलिए. I want to mention that there are many Bengali scientists from Bengal in the Chandrayaan project. Hey, तुम बैठो तो, फालतू आदमी बैठो तुम. ताला बोल नहीं, भाषण दो ना. नहीं प्लीज. अगर सकते हो तो भाषण दो. They are scientists from Bengal, from Tamil Nadu, from Kerala, from other states, but they all are Indian scientists. Please. Sir, आप तो दादा you know the delicacy of the thing. Now please, आप बैठिए. He doesn't need your support. Please, Sagadda. Every scientist Sir, from any region, when any we part see- of India, he was Indian scientist. Ji, please. when we are seeing Okay. Chandrayaan soft landing on the moon, in front of the TV, we saw Chandrayaan, then suddenly the Prime Minister's photograph came. The whole country wanted to see the soft landing. They saw the Prime Minister photograph. Why should this happen? Chandrayaan is not the result of one particular individual's effort. It is the result of 50 years of scientific work done by hundreds of scientists
throughout the country. Sir, I was very pleased to hear Rajnath Singh speak on scientific temperament. The man who spoke of scientific temperament in this country was Jawaharlal Nehru. Scientific temperament means you do not accept anything without experiment, without logic. Science is knowledge which is certain and systematic. I am like Rajnath Singh, former professor of physics. But in my physics, while speaking on Chandrayaan, I don't bring Ram Mandir like Rajnath Singh. There is no connection between the two. Sir, sir, You continue on the. I want to say, I am not Indian. Sir, I want to say, when somebody in top position says that Ganesh had plastic surgery in the ancient days, I do not accept this. When somebody says that Kauravas were born due to in vitro fertilization, I do not accept this. When somebody says that in Ramayana, the Pushpak Rath was a discovery by the ancient Indians, I do not accept this. I accept only that which is proved by science. Let me make it very clear. Sir, let me give a background. Sir, the background is this. In 1957, the Soviets sent the Sputnik to the space. In 1961, Yuri Gagarin became the first person in space. In 1963, Valentina Tereshkova became the first woman in space. It was at this time that Jawaharlal Nehru felt that we must go into space science. In 1962, he set up the INCOSPAR, Indian National Committee for Space Research, headed by Dr. Vikram Sarabhai, a cosmic ray physicist. Nehru died in 1964. In 1969, when Indira Gandhi was Prime Minister, the ISRO was set up. And in 1972, when Indira Gandhi was still Prime Minister, the Department of Space was set up. So whatever is happening today is continuation of what Dr. Vikram Sarabhai started in 1962. His legacy. He unfortunately died in 1971 in Thumba, the space which he liked so much. So now, India has... Arey, chup karo. Sir, chup karo. Sir, India got the first success in Aryabhatta, which was completely designed and fabricated in India and launched by a Soviet Cosmotos 3M rocket from Kapustin Yar on 19th April 1975. ISRO has successfully launched almost 150 satellites since 1975. Sir, ISRO has established major space systems for communication, television broadcasting, meteorological services, resources monitoring and management, space-based navigation services. ISRO has its headquarters in Bengaluru. Its facility spreads across various centers. Launch vehicles are built at Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram. Satellites are designed and developed
at UR Rao Satellite Center, Bengaluru. Integration of launching of satellites and launch vehicles are carried out from Satish Dhawan Space Center in Sriharikota, Andhra Pradesh. Development of liquid stages, including cryogenic state, very cold state, is done in Liquid Propulsion Laboratory at Bengaluru. ISRO has carried out 125 spacecraft missions and planned several missions including Gaganayan, an interplanetary mission such as Chandrayaan, Lupex, Shukrayan and Mangalayan, MOM-2. Sir, ISRO, our own organization, it has surpassed NASA in efficiency, resourcefulness and cost effectiveness. In 2005, NASA launched the solar mission that cost $550 billion. Now ISRO is planning to launch the similar solar mission, Aditya L1, at a cost of $55 million only. That is 1/10 of the cost of NASA. There are 4 types of satellites sent by ISRO. One is communication satellites, which helps our communication system. 2 is Earth observation satellite, which take the pictures of the Earth. 3 is navigational satellite, and 4 is astronomical satellite. These works are going on. What is great about Chandrayaan, that so far we are using rockets to send satellites around the Earth. They are called either geosynchronized satellites, that means speeding at the same speed as Earth, or the polar satellite launch vehicles, which are placed fixed in the poles. Now, for the first time, sir, we have gone that from a satellite, our rocket has taken a lander mission, lander and a rover, onto the surface of the moon. We failed in Chandrayaan-2. Our lander crash landed, but this time there was no crash. The lander landed very softly. For one day, it sent the messages from moon, but then it had to be jettisoned. We are very happy, all of us, that India has achieved this. But we must have things in perspective. We are talking of a moon, not a moon landing, sending a lander in moon. There is a propulsion module and there is a landing module. Propulsion module takes it from the Earth orbit into the moon. Then landing module goes to the moon surface. Sir, I must remind you, आपको याद दिलाने चाहता हूं कि 57 में मैं बोला सोवियत स्पुतनिक भेजा, हम अभी मून में एक तो सॉफ्ट लैंडर भेजा 1969 में. आज से 54 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग stepped on the moon as a man. Stepped on the moon. He said, it's a small step for me, but a giant step for mankind. Giant leap for the mankind. So, हम लोग 54 नहीं है, तो हमें बैलेंस करके चलना चाहिए. लेकिन हमारा जो सैटेलाइट सिस्टम है, ये बहुत सर्विस दिया. दे प्रिडिक्ट वेदर, कब तूफान आ रहा है, दे प्रिडिक्ट
crop development, and they, GPS, our taxi walas use GPS now. That is also based on satellite tracking. So I want to say that Chandrayaan-3 has demonstrated safe and soft landing on the lunar surface. It has demonstrated rover roving onto the moon. Thoda hi gaya. And to conduct in situ scientific experiments. What are the technologies there? Altimeters, laser-based altimeters, velocimeters, inertial measurement with laser gyro-based surface, propulsion system, navigational guidance and control, hazard detection and avoidance, and landing leg mechanism. ये सब हम इंडिया में डेवलप किया, यही हमारा गर्व की बात है. गर्व से बोलो, ये लैंडर पेलोड, इसमें चंद्रशेखर के नाम पे चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, to measure the thermal conductivity and temperature. Instrument for lunar seismic activity. Langmuir probe to estimate the plasma density and its variation. So, itna sir, I am concluding. I am not discussing anything controversial. तो मुझे बोलने दिया जाए. अग्रवाल जी, चेयरमैन साहब, सर मुझे यही कहना है कि हम आगे बढ़े हैं, लेकिन बहुत दूर जाने पड़ेगा. See, we have not mentioned, nobody has mentioned Kalpana Chawla. She went by the Columbia Space Shuttle. Her craft exploded in 2003, and she, along with 7 others, died. Today I pay respect to Kalpana Chawla, who was an Indian-born astronaut. Sir, आज क्या है? 1 साल पूरा हुआ. क्या? किसका? फ्रैंक रूबियो, एक नासा के एस्ट्रोनॉट है. वो 1 साल स्पेस में है. 1 साल इंसान स्पेस में है. He is set to return to Earth this fall after setting the record for the longest single space flight by astronaut. He arrived at the International Space Station 21st September 2022 and will return home after 371 days in space. Rubio and his fellow crew members conducted dozens of scientific investigation and technology demonstration. Sir, ये नासा 58 में सेटअप हुआ. उस समय सोवियत यूनियन आगे था. वो पहले स्पुतनिक भेजा, पहले मैन ऑन द मून भेजा, पहले मैन ऑन द मून नहीं, मैन इन स्पेस भेजा, वुमेन इन द स्पेस. लाइका मर गया, लेकिन वेलेंटिना टेरेस्कोवा पहुंच गया. तो हमारा लक्ष्य जो है, आप लक्ष्य सिनेमा देखे होंगे ऋतिक रोशन का. लाइफ में एक लक्ष्य होना चाहिए. लक्ष्य यही है कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे. देश में जो कुसंस्कार है इन लोग का बीच, ये दूर करेंगे. देश को विज्ञान में और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाएंगे जी. तभी हमारा काम पूरा होगा. सर, अभी भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है. वो उधर ही रहता है, खाता है, ऐसा जैसा घर है. फ्रैंक रूबियो ऐसा किया है. अभी भी चाइना एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना दिया. 2 अमेरिकन have 1, चाइनीज have 1. सो चाइनीज भी स्पेस स्टेशन. नाउ प्लीज, बहुत सारे काम करना है. ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसमें नासा, रशिया, जापान, यूरोप एंड कनाडा. अभी एक और बता है आपके. वन मोर स्पीकर इज देयर, कोरोना पार्टी जी.
सर हमको यही कहना है कि हमारा रैंक अभी 6th है। किसका पीछे? नासा, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा एंड चाइना। चाइना बहुत आगे बढ़ गया है। सर आज इसलिए इस चर्चा में मैं जवाहरलाल नेहरू को प्रणाम करता हूं। थैंक यू। इंदिरा गांधी को प्रणाम करता हूं, ये हमारा स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्रणाम करता हूं और हमारा सतीश धवन और यूआर राव, इन लोगों को प्रणाम करता हूं। ये सब लोग मिलके हमारा स्पेस प्रोग्राम आगे बढ़ाया। ये बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। थैंक यू, थैंक यू। लक्ष्य में श्री लाबू श्री कृष्ण जी। चलिए चलिए बैठिए, अब बैठिए। आप जब आए तो बोलिएगा इस बात को, जब आपका बोलने का नंबर आएगा तब इस बात को बोलिएगा। जी प्लीज डोंट टेक दिस आउट ऑफ माय टाइम सर। देख लेंगे उसको, देख लेंगे उसको, ठीक है, देख लेंगे उसको। यदि आपत्तिजनक बात है तो उसको देख लिया जाएगा ना। प्लीज लवकुश सर देख लेते हैं उसको, देख लेंगे ना प्लीज। Sir, don't take this out of my time, sir. It's good to see you in the new chair in the new parliament, sir. I thank my party floor leader, Mr. Reddy Garu, for allowing me to speak on the second day of the inauguration of this new parliament building, sir. From YSR Congress and also from all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, we thank the achievements of ISRO. We congratulate the achievements of ISRO. We are indebted to all the scientific achievements they have done in the last 70 or so years, sir. When I was asked to speak on this subject, the first quote that came to my mind was of Isaac Newton, sir, when he said, "I was able to see further because I was standing on the shoulders of the giants, sir." We were able to achieve Chandrayaan mission because there were so many people that have contributed to it. Just now, Professor Dada has mentioned about Vikram Sarabhai, Satish Dhawan, U.R. Rao, Madhavan Nair, Kastur Rangan. Because of what they've achieved in the last 65 to 70 years, Shivan, all these people have achieved and contributed to the frontiers of the space exploration, sir. Because of them, we were able to achieve Chandrayaan mission to the moon, sir. And I also congratulate Somnath and his team, who was able to place a lander on the far side of the moon, sir. When I was watching it as a tech geek, like all of us, I was so happy for 3 different reasons, sir. The first one was, it was launched from Sriharikota, Andhra Pradesh. It's my Telugu land, sir. And it has been found to be lucky for all the launches, and they've all been successful, sir. And the second reason that I'm really happy was because of when I was going through the profiles of all the contributors for this success, all the scientists who were involved in this, majority of them came from state universities, sir, or engineering colleges run by state government, sir. It was a great achievement. They didn't come from any IITs or NITs, sir. They just came from the state-run universities, sir. Third thing that we all should be happy is the participation of women in this endeavor, sir. They all dressed in kanchi saris very beautifully, but they were having that vigor to make sure that our Chandrayaan mission was very successful, sir. But there are a lot of questions raised, not in the Western media, sir, why India is doing this activity when there's so much poverty in the country. For them, sir, there are 3 reasons. The first one being, we want to cross the frontiers of the science and space exploration, sir.
It won't happen just like that, sir. Take, for example, as Dada was mentioning earlier, in 1965, we were, human was able to land on the moon, sir. But from the last 50 or 55 years, the space exploration of most of the countries has actually gone back, sir. We think just because we have something like an iPhone in our hand, iPhone 1 to iPhone 15 actually accidentally happens. But it doesn't happen like that, sir. Unless some sort of impetus is given, some sort of iteration is given at some point of time, it doesn't happen just accidentally, sir. That's what has been happening in the space exploration. And as a country that is growing, as a country that is in the top 5 of the economies, this is the time to actually push those boundaries, sir. And second reason being, we have to dream big for the next generation. And we have to prove to the next generation that anything can be possible in India, sir. But I, being the member of Standing Committee on Education, I was able to go through the funding that was available to most of the colleges that people like Somnath has gone through, sir. Like TKM College, which was there in Prem Chandraji's constituency, sir. There's a funding called RUSA, which was given to the state universities, sir. Allocation was around 8,120 crores, sir. It was almost the same for the last 4 or 5 years. If you look at the spending, it's not even 60% of the spending is happening, sir. This spending is expected to take the state universities, state-run universities, from where the scientists who are working in ISRO are coming from, sir. But somehow this funding is not able to reach them. The reasons, whenever we ask them, the state is not contributing 30% or 40%. That is the reason that they always come up with, sir. But who is the person that are actually losing, sir? It's the scientific community of this country. So I hope the minister was here, but I hope the point is taken so that this scheme can be altered, so that the maximum amount of funds can be utilized by all the state universities and state governments, sir. And coming to the women participation, Shashi Tharuji has mentioned about it, and there were some comments from the other side also, sir. There's 20 to 25% of the women participation in ISRO, which has a workforce of almost 16,000, sir. And if you look at the STEM graduates from India, women STEM graduates who are pursuing science, technology and engineering in India, 43% of them are women, sir. When you compare to US, it is only 34%. When you compare to the developed countries like Canada, it's only 31%. Even in UK, it is only 38%, sir. We are far, far, far ahead, sir. And also 30% of the research papers across 186 fields, this information I got it from Scopus, sir, are being published by women, sir. But only 14%, even though there's 43% of them are STEM graduates, of them are women, only 14% of the women are participating in STEM-related jobs, sir. Yesterday we were very proud that we have passed the women reservation bill, sir, but these people are putting the effort for almost 15 to 16 years to graduate, coming out with these degrees, but not able to participate in this workforce, sir. Unless we come up with new schemes to encourage them, unless we place the money where we talk, this situation is not going to increase, sir. And third, Minister Jitendra Singh ji is also here, sir. It is regarding National Research Foundation, sir. I wish somehow every Friday the House gets adjourned, sir, and he always gets the time. We always get the time to ask him the question only on the Friday, but somehow it gets adjourned and we never get to ask the question. But National Research Foundation has been envisaged almost 4 years back with the outlay of 50,000 crores that has been mentioned. And until now, not a single rupee has not been, correct me if I'm wrong, but not been actually given out to any of these IITs or NITs or any of the state-funded universities, sir. For the last 4 years, that all these institutes have been actually waiting for it, sir. Mike, please. Yeah. Mike, sir, Mike. Because it's still being structured. So when my turn comes to speak, I'll elaborate on that. Yes, sir. I'll also elaborate on, because out of these 50,000 crores, we thought it's all coming from the state government, sir, but we have been told that 36,000 crores are supposed to be mopped up from the private. Yes. If you can give us the modalities I'll of how you're elaborate, going to because I raise don't it. want to interrupt you, no.
So I'll elaborate when my turn comes. Yes, because- You're right. Almost 36,000 will be from non-government sources. That's the difference now. Because Yes. Dada, please. Dada, Baidi, please. Because we are actually at one of the lowest globally, sir, with respect to the spending on the research. Only 0.7% of the GDP is spent on the research, sir. So that's why I expect the minister to answer it when elaborate it when you're speaking of it, sir. And the other point being, I've been speaking to a lot of the startups who are in the space exploration, sir, and most of them have come up with a request. You are doing PLI, Professional Link Incentive Scheme, for all the industries, coming from food sector to steel and every other industry. But somehow this PLI scheme is not being implemented for the space technology, sir. So if the minister can actually take it up. And also the second suggestion that they came up with is regarding GST exemptions for private satellite launch service providers, sir. There's a company called Skyroot, which is based out of Hyderabad. They're trying to, most of the cost that happens is during the launch, sir. And this company, Skyroot, is trying to reduce the cost, like how SpaceX is doing. But indigenously, they're trying to reduce it. So if some sort of encouragement can be given with regards to this, that will be a big favor to them, sir. Because, let me put this on record, sir, because there's no disrespect to our scientific community or anything like that, sir. But if you look at GSLV Mark IV, correct me if I'm wrong, it can only put 4 tons into the geostationary orbit, sir. Whereas Long March 5, which is the Chinese one, can put almost 14 tons satellite in the same orbit, sir. And also in the lower orbit, GSLV Mark IV can only place 7 tons of the satellites, sir. Whereas Long March 5, which is of the Chinese one, can put almost 25 tons in the lower orbit, sir. Because there's a huge difference in our payload capacity and their payload capacity, sir. This can be closed down only if the participation of the private players in this whole thing, sir. So I wish the government, yes, our scientific community is doing exceedingly well with a frugal funding that is available for them, sir. But they will do much, much better if the funding can be increased, sir, and also if the private participation is increased, sir. I'll end up by saying what our Prime Minister has, I keep on quoting, Abhi samay hai aur sahi samay hai. I think this is the right time for all of us to do, because India being a country with young population, with a lot of aspirations, so this is the right time for the treasury benches to actually put the money where they're talking, sir. Thank you very much. Thank you. Honorable Member Pratap Rao Jadhav. धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज यहाँ पर जो हो रही है चंद्रयान 3 की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन 15 अगस्त 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विकसित करने में और उपयोग करने के दृष्टि से किया गया था। मेरे पहले बहुत सारे सदस्यों ने यहाँ पर बहुत सारे बातें यहाँ पर कही, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अब तक भारत ने अंतरिक्ष का सफर शानदार तरीके से तय किया है। साइकिल व बैलगाड़ी से शुरू हुई हमारी अंतरिक्ष की यात्रा मंगल और चांद तक पहुंच गई है और सूरज के तरफ भी हम निकल चुके हैं। आज भारत मानव को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी भी कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष जी, 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के प्रक्षेपण केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर अंतरिक्ष के दुनिया में अपना भारत के सुनहरे भविष्य के लिए नींव तैयार की थी। आर्यभट्ट उपग्रह का निर्माण इसरो के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय न तो भारतीय वैज्ञानिकों के पास आधारभूत सुविधाएं थी और न ही पर्याप्त संसाधन थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जज्बे के आगे समस्याएं छोटी हो गई
और इसरो के तत्कालीन अध्यक्ष प्रोफेसर सतीश धवन के मार्गदर्शन के युवा टीम ने आर्यभट्ट का निर्माण किया था। अध्यक्ष जी, हमारे वैज्ञानिकों ने 22 अक्टूबर 2008 को 1380 किलोग्राम का चंद्रयान 1 भेजा, जो 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। चांद पर तिरंगा लहराते ही भारत चंद्रमा पर अपना झंडा लगाने वाला चौथा देश बन गया। अध्यक्ष जी, यह सिलसिला यहां नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नेतृत्व में नेविगेशन के कार्यक्रम में भी बहुत तेजी आई। अध्यक्ष जी, कारगिल युद्ध में के दौरान अमेरिका ने अपना नेविगेशन सिस्टम भारत को देने से मना कर दिया था, जिससे हमारी सेना को कारगिल की पहाड़ियों पर दुश्मन के छुपे ठिकानों का पता लगाना मुश्किल हो गया था। लेकिन हमारे सैनिकों के अदम्य साहस का परिचय दिया और कारगिल युद्ध में विजय प्राप्त की। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठान लिया था कि भारत अपना नेविगेशन सिस्टम तैयार करेगा। अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह IRNSS लॉन्च किया। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित था और इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। अध्यक्ष जी, 27 मार्च 19 को इसरो ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। इन दिनों सैटेलाइट से एक लाइव भारतीय सैटेलाइट को नष्ट करने में सफलता मिली। अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराने वाला भारत चौथा देश बना। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल 2019 को इसरो ने इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह समेत 29 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया। इसमें 28 विदेशी उपग्रह शामिल थे। पहली बार इसरो ने एक ही मशीन से 3 अलग अलग कक्षाओं में उपग्रहों को स्थापित किया। अध्यक्ष जी, इसरो के समक्ष बहुत चुनौतियां थी, जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों की प्रशिक्षित करने और मानव अंतरिक्ष उड़ाने के लिए लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीक भी कमी थी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तकनीकी दक्षता का अभाव, निजी क्षेत्र की सीमित भूमिका, परियोजना का धीमा कार्यान्वयन, सरकार द्वारा पर्याप्त समर्थन नहीं होना, बजट की कमी। लेकिन जब केंद्र में माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार आई, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आई और बजट की कमी भी दूर हुई। अध्यक्ष जी, चंद्रयान 2 से मिली सीख और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर चंद्रयान 3 पर भी काम किया और सफल प्रक्षेपण किया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में मिली लंबी छलांग लगाई। इसरो ने वैज्ञानिकों की इस बड़ी कामयाबी से देश भर में खुशी की लहर आई और दुनिया ने भारत की बड़ी उपलब्धि को खुले दिल से सैल्यूट किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे यहाँ बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जिस लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना से मैं आता हूँ, वहाँ से चंद्रयान मिशन में जो सिल्वर स्टर्लिंग ट्यूब लगी है, वह मेरे लोकसभा क्षेत्र बुल्ढाना के खामगांव तहसील से बनाई गई थी और महाराष्ट्र के हिंगोली भूमि में एक शुष्क हिस्सा दुनिया के सबसे महत्वाकांक्षी विज्ञान कार्यक्रमों में से एक गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए LIGO वेधशाला का स्थल बनने जा रहा है। यह साधारण प्रयास वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए सरकार के दृढ़ समर्थन का एक चमकता उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने अभूतपूर्व वैज्ञानिक अन्वेषण का एक युग देखा है, जिसने हमारे देश को वैश्विक वैज्ञानिक उपलब्धि में सबसे आगे खड़ा कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, हिंगोली
के परिदृश्य को सुशोभित करने के लिए तैयार LIGO इंडिया प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के शिखर का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व द्वारा समर्थित ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के हमारे देश के संकल्प का प्रतीक है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ब्रह्मांड के बारे में भी यहाँ पर बोला गया, लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारे जो सनातन हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है, वो ग्रंथ में भी ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश को हम मानते हैं, और कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कार्य है उसको अंग्रेजी में गॉड कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। 1 मिनट। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को जो कार्य है उसको गॉड मानते हैं, उसको गॉड बोलते हैं। गॉड जी बोले तो जनरेट करना, ओ बोले तो ऑपरेट करना, और डी बोले तो डिस्ट्रिक्ट करना, बोले तो ब्रह्मांड का निर्माण, ब्रह्मांड की रक्षा और ब्रह्मांड की समाप्ति, ये तीनों हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश में समाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये वैज्ञानिक को इसका श्रेय देते हुए हमारे ग्रंथ लिखने वाले ऋषि मुनियों को भी मैं इसका श्रेय दूंगा कि जिन्होंने अपने ग्रंथों में पुराने जो 5000 नहीं कई हजार साल पहले हिंदू धर्म के जो हमारे ग्रंथ है, वो ग्रंथ में ये सभी चीजों का उल्लेख वहां पर क्या है। आज चंद्रयान का जो उल्लेख यहाँ पर हो रहा है, अध्यक्ष जी, हम बचपन में जब हमको समझ भी नहीं थी तो तब हमारी माँ, हमारी नानी, हमारी दादी हमको चंद्रमा की लोरियां सुना कर वहां पर हमको सुलाती थी, खाना खिलाती थी, और आज वो चंद्रमान की जो उत्सुकता थी हमारे दिल में पहले से ही मौजूद थी, और आज हमें ये भी महसूस हो रहा है कि हमारा देश और हमारा देश का तिरंगा वो चंद्रमा पे जाके लहरा रहा है। मैं हमारे वैज्ञानिकों को और उनको पूरा सपोर्ट करने वाले हमारे एनडीए सरकार को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं मेरी भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर दिनेश कामित जी। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे चंद्रयान 3 की सफलता पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिकों का आभार प्रकट करता हूं कि उन लोगों के प्रयास से हमारा देश का नाम गौरवान्वित हुआ है। सभी भारतवासियों के लिए एक बड़े हर्ष गर्व की बात है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने चांद पर अपना यान भेजा है। अब हम सभी देशवासियों को यह उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना यान भेजा था। उसके बाद 10 से 15 साल की मेहनत के बाद दोबारा यह समय आया है कि हमारा यान फिर से चांद पर अपना कदम रखा है। महोदय, चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यह यान चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार सायं 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक उतर चुका है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया है। इसके अलावे भारत एवं भारतीय वैज्ञानिकों के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नई पहचान प्राप्त हुई है। अब हम सभी देशवासियों को अपने वैज्ञानिकों का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को उनके द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। महोदय, चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर के चलने का प्रदर्शन करना और इन सीटू यानी चांद की सतह पर ही वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना है। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लैंडर में कई उन्नत प्रौद्योगिकी मौजूद हैं, जैसे कि लेजर और RF आधारित अल्टीमीटर, वेलोसीमीटर, प्रोपल्शन सिस्टम आदि। ऐसी उन्नत तकनीकों को पृथ्वी की स्थितियों में सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए कई लैंडर विशेष परीक्षण जैसे इंटीग्रेट कोर टेस्ट, इंटीग्रेट हॉट टेस्ट
और लैंडर लैंग मैगजीन प्रदर्शन भारत परीक्षण की योजना बनाई गई है और इसे सफलतापूर्वक किया गया है। महोदय, चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत का लक्ष्य अपनी तकनीकी कौशल, वैज्ञानिक क्षमताओं और अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। यह सफलता अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समुदाय में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। यह मिशन युवा पीढ़ी को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा तथा विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम करेगा। महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे पहली बार 2008 में चांद पर अपना चंद्रयान भेजा था और 2008 में ही हमारे संसदीय क्षेत्र सुपौल तथा कोसी में भयानक विनाशकारी बाढ़ आई हुई थी, जिसकी वजह बहुत ही बड़े स्तर पर जान व माल की क्षति हुई थी। साथ ही कई रेल मार्ग ध्वस्त हो गए थे, जिन पर आज कुछ खंड भी परिचालन का शुभारंभ नहीं हो पाया है। महोदय, सदन के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि पूर्वी मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज तक CRS का इंस्पेक्शन 11 जनवरी को हो चुका है, किंतु अभी तक उस खंड पर रेल परिचालन का शुभारंभ नहीं हो रहा है। बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है, जबकि कई बार माननीय रेल मंत्री से संपर्क करके उनका ध्यान आकर्षित किया, उस पर अतिशीघ्र रेल परिचालन का शुभारंभ किया जाए। जोगबनी दानापुर तथा जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया जाए, जिसे रेलवे बोर्ड के द्वारा जोगबनी से चलने वाली ट्रेन जिनका नया समय सारणी निर्गत हो चुका है, उसे भी हरी झंडी दिखाकर परिचालन शुभारंभ किया जाए। साथ ही राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी 12,527 और 12,528 सरायगढ़ या सुपौल तक विस्तार किया जाए, जिससे सुपौल जिला सहित कोसी तथा सीमावर्ती क्षेत्र के सभी जनता को इसका लाभ मिले। महोदय, इसी के साथ पुनः मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक धन्यवाद एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी वैज्ञानिकों को उनके कार्य क्षेत्र में सूर्य की तरह तेज प्रकाश बना रहे और इसी तरह देश को सर्वोच्च सम्मान मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्री सच्चिदानंद सामंत जी। I would like to thank Honorable Chair to grant me this wonderful opportunity to participate in the discussions regarding success of Chandrayaan-3 mission and other achievements of our nation in the space sector. It's my first address in this new house that has brought with the historic passage of Nari Shakti Bandhan Adhiniyam, and today we are to discuss the other momentous milestone of soft landing of Chandrayaan-3 near the south pole of the moon, making Bharat the fourth country to achieve a soft landing on the moon after the US, Soviet Union and also China. 23rd August, all of us were glued to the screen and were keeping updates of what was happening second by second. Whole of India watched it through group live streams with finger crossed, becoming a part of this majestic lunar mission by heart. And when it landed, there was celebration and joy all over. It was the victory of each of 140 crore Indians. Really, it was the day when we saw the best of the poetic and literary references of Chand in relation with the space achievement. चांद पे घर, चंदा मामा के पास, चांद दिलाऊंगा, etc., etc., and so on. In this regard, Russia's president acknowledged the impressive progress made by India in science and technology. South Africa president celebrated the moment as a significant achievement for the BRICS coalition, while Nepal's prime minister termed it historic. The European Space Agency was thoroughly impressed, and the United States praised the success for its inspirational and historic significance.
In this regard, we acknowledge and celebrate the significant contribution of Indian scientists who made this possible. It is their efforts and perseverance that paid off. They are shining examples of knowledge, dedication, and expertise. The exceptional analytical abilities of our scientists, their steadfast commitment to exploration, and relentless drive to overcome challenges consistently places India at the forefront of global scientific achievements. Their quest for excellence and curiosity not only solidify our global reputation, but also inspire others to dream big and contribute to the world's knowledge. The involvement of large number of women scientists have contributed to the success of Chandrayaan-3 and India's space program in general motivates aspiring women scientists like no one else. In this regard, I am happy that several scientists from our state, Odisha, played very significant roles in ISRO Chandrayaan-3 lunar exploration mission. Devashish Mahapatra, Sarath Kumar Das, Atal Krishna Khotua, and Naga Raju, and so many Odias have contributed in this mission. I have to congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, his visionary and exemplary leadership to inspire India's space program for human welfare and scientific progress. He has always encouraged science and innovation. Under his leadership, a series of reforms have been ushered which have made research and innovation easier. The celebration of 23rd August as the National Space Day is an example of his love, respect and belief in Indian space program Chandrayaan-3 Triumph serves as a remarkable affirmation of Prime Minister Narendra Modi's resounding message, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. I have to express my thanks for his leadership of including common man, everyone in the process, whether it is sports or space launch or G20. Thanks for Jan Bhagidari. Similarly, it has huge impact. It has opened up web of opportunity for several sectors that could boost India's economic growth. It has opened up a new horizon of opportunity for several startups and companies involved in sectors such as space technology, aerospace, defense and R&D. It will also